Again, welcomes to you on online platform of SHRI Education Group Bhadra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you our remaining exercise 4.3 linear equation in linear equation in two variable. Linear equation in two variable. Okay, of class 9th. Our sixth question: if the work done by a body, question number 6, if the work done by a body on application of by a body on application of a constant force is directly application of a constant force is directly proportional to proportional to the distance traveled by the body. The distance traveled by the body. Okay. Express this in the form of an equation. Express this in the form of an equation. This in the form of an equation. In two variables. Equation in two variables. And draw the graph of the same. And draw the graph the work done the graph of the same by taking the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. The constant force as 5 unit. Also read from the graph. Also
read from the graph the work done when the distance traveled by the body is when the distance traveled by the body is first 2 units and second 0 unit. Okay. Now solution. Now let the work done by body, let the work done by body is equal y unit and traveled distance is equal x unit, because we know that work is equal force into distance, force into displacement. ये फिजिक्स में यूज होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एज ए डिस्टेंस. ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो वर्क क्या है, y है, फोर्स फिक्स है, कांस्टेंट है 5 यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट इट मींस डिस्टेंस क्या होगी, x. इक्वेशन फर्स्ट. This is linear equation in 2 variable. Okay. अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें अपन. फिर पॉइंट्स ऑन ग्राफ, टेबल फर्स्ट ज्ञान करेंगे. x y पॉइंट्स ऑन ग्राफ. ओके, अब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, तो 0 पुट करेंगे, 1 2 ये इतना पुट कर लिया अपन. ओके, 0 1 2. तो y की वैल्यू गेन होगी, पुट x इज इक्वल 0, मिनिमम 3 वैल्यू यहाँ पे शो करनी है इन इक्वेशन फर्स्ट. y is equal 5 into 0
y is equal also 0. Okay, put x is equal 1 in equation first, y is equal 5 into 1, y is equal 5. Okay, ये 5 आ गया. Put x is equal to in equation first, y is equal 5 into 2, y is equal 10. ये 10 आ गया. Now points on graph A, इसको बोल देते हैं अपन O 0,0 origin point है, A 1,5 and B 2,10. This is our table first from equation first. Okay, by table first we obtain graph. By table first we obtained graph. ओके, तो x एक्सिस है ओनली और ओनली प्लस x एक्सिस है, माइनस x एक्सिस है. ओके, प्लस की वैल्यू है x एंड y की, तो माइनस x एक्सिस एंड प्लस x माइनस y एक्सिस की नीड नहीं है. x और y, दिस इज फॉर्मेट ऑफ आवर ग्राफ. एंड नाउ सेट द स्केल ऑन ईच एक्सिस. Minimum value is 0 and maximum value is 2 on x axis. Okay, तो 1 का डिफरेंस ले लें, 1 and 2. ओके, मिनिमम मैक्सिमम गैप सेम है. ओके, 0, 5, 10, तो 5 का डिफरेंस ले लें अपन, 5 and 10. ओके, तो ये होएगा पॉइंट O 1 and 5, पॉइंट A and 5 है 2 and 10 B. इसको ज्वाइन करा दो, इसको एक्सटेंड कर देना, इसको भी एक्सटेंड कर देना. ओके, ये ग्राफ जो गेन हुआ है वो y एक्सिस, वो स्ट्रेट लाइन में गेन हुआ है. इट मीन्स y एक्सिस पे जो थिंग है वो x एक्सिस की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी. अगर प्रोपोर्शनल होता है तो ये जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में गेन होएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या टैग कर रखा है अपन ने, वर्क. ये y क्या है, वर्क y इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, और ये डिस्टेंस x इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है. ओके, नाउ स्केल on x axis. 1 big box is equal 1 unit. On y axis 1 big box is equal 5 unit. 5 का डिफरेंस है ना, 5 यूनिट. अब 2 क्वेश्चन गिवन है. पार्ट फर्स्ट, डिस्टेंस पुट करनी है. व्हेन डिस्टेंस x, distance x is equal to 2 unit, then work y is equal 5 into 2, then 10 unit होएगा. ओके, सेकंड, when distance x is equal 0, then work
y is equal 5 into 0, 0 unit होगा. Okay, then your question number 6 is complete. Okay, now question number 7. In question number 7, Yamini and Fatima, two students of class 9th. Question number 7, Yamini and Fatima, two students of class 9th. Okay, of a school, together contributed rupees 100, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund, towards the Prime Minister Relief Fund. Okay, to help the earthquake victims, to help the earthquake victims. Write a linear equation. Write a linear equation which satisfies this data, which satisfies this data. And draw the graph. And draw the graph. Okay. Solution. Let contribution of Yamini is equal X rupees and contribution of Fatima is equal Y rupees.
according to question, x plus y rupees is equal 100 rupees. This is algebraic value and this is numeric value. अपन ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई. x इज इक्वल 100 माइनस वाई. इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं. अब यहाँ पे अपन टेबल की फॉर्मेशन करेंगे. ओके, x, y and points on graph. क्लियर. y की वैल्यू पुट करनी है. y की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर लो. 10 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो. देन x की वैल्यू गेन हो जाएगी. ओके, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल के. तो आप कुछ भी आप पुट कर सकते हो इसमें. तो पुट y इज इक्वल 10 in equation first, then x is equal 100 minus 10, x is equal 90. Okay, ये आ गया 90. Put y is equal 20 in equation first, then x is equal 100 minus 20, then x is equal 80. 100 minus 20 it means 80. Okay, ये 80 हो गया. Put y is equal 30 in equation first, then x is equal 100 minus 30, x is equal 70. Okay. Now points on graph. Let this is point A, coordinate of point A. In coordinate first of value of x and then value of y. This is point B. Let x 80 and y 20. C x 70 and value y 30. Okay. This is our table first. Okay. Now by table first we obtained the graph. Set the format first of all. X-axis, value of x-axis in positive and value of y-axis is also positive. Okay, तो माइनस x-axis एंड माइनस y-axis की नीड नहीं है. ये फॉर्मेट प्लस y-axis एंड प्लस x-axis अपन टाइप करेंगे. नाउ सेट द स्केल ऑन ईच एक्सिस. तो इसमें वैल्यू क्या है? x-axis पे मिनिमम 70 है और मैक्सिमम 90 है. तो 70 से स्टार्ट करेंगे अपन, 80 एंड 90. ओके, और यहाँ पे डिफरेंस 70 माइनस 0. 70 का है तो किंग शो कर दिया, किंग, और वी कैन से जंप, किंग और जंप. क्लियर. नाउ मिनिमम वैल्यू 10 on x-axis and maximum value 30. 10 का डिफरेंस ले लेंगे. 10, 20 and 30. Okay. Now 90, 10. Value of x 90 and value of y 10. Okay. Value of x 80 and value of y 20. Value of x 70 and value of y 30. Okay.
इसको ज्वाइन करा देंगे अपन, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको भी यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। ये कौन सी इक्वेशन के लिए है? x plus y is equal 100. Okay, now write the scale here. Scale on x axis, one big box is equal 10 unit on x axis, and on y axis one big box is equal also 10 unit. Okay, now our question number 7 is complete. Last question of exercise 4.3. In countries, question number 8, in countries like USA and Canada, like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. Temperature is measured in Fahrenheit. Okay, Fahrenheit, HEIT आएगा, height. Where is countries like India, it is measured in Celsius. It is measured in Celsius. Okay, here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. Here is a linear equation. Okay, that converts
that converts Fahrenheit height to Celsius. Okay. फाइव पार्ट्स है इसमें, ये इक्वेशन है। F इज इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ड्रॉ द ग्राफ पार्ट फर्स्ट, फिफ्थ पार्ट है इसके, तो फर्स्ट में ग्राफ ड्रॉ करना है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। फिर सेकंड क्वेश्चन राइट, सेकंड पार्ट राइट करेंगे, उसका आंसर गिवन करेंगे। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन of the linear equation using Celsius for x-axis, using Celsius for x-axis, x-axis यानी इसको x-axis पे टैग करना है अपने, and Fahrenheit for y-axis, and Fahrenheit for y-axis. Okay, solution. Because F9 is equal 9/5 Celsius plus 32. ओके, इक्वेशन फर्स्ट अपन सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे और फारेनहाइट की वैल्यू गेन करेंगे। तो सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे अपन को टैग करना है। सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे, फारेनहाइट को वाई एक्सिस पे, और अब आ जाएगा पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ओके, पॉइंट्स ऑन ये डिग्री सेल्सियस और ये फारेनहाइट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 टैग कर रहे हैं अपन, तो 5 4 जा ये कैंसिल हो जाएगा ना, 20 टैग कर रहे हैं अपन। एक तो 20 टैग करेंगे और एक वैल्यू इसकी 40, एक वैल्यू 60। 5 की टेबल से कट हो जाएगा ये 20 40 60। ओके, और फारेनहाइट की वैल्यू गेन हो जाएगी। फारेनहाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? गेन। तो पुट C इज इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो क्या आएगा? फारेनहाइट इज इक्वल 9/5 इंटू 20 प्लस 32। 5 4 जा 20, 9 4 जा 36 प्लस 32, क्या हो गया? 2 and 6 8, फारेनहाइट की वैल्यू आएगी 68। ओके, पुट C इज इक्वल 40
in equation first. Fahrenheit is equal 9 upon 5 into 40 plus 32. 5 8s are 8 9s are 72 plus 32. So 2 to 4 7 and 3 10. Fahrenheit क्या आ गया 104. Now put Celsius is equal C is equal put C is equal 60 in equation first. Then F is equal 9 upon 5 into 60 plus 32. ये 5 12 जा 60 12 9 जा 108 plus 32. 8 to 10 3 और 1 4 और 1 as it is. ये 140 आ गया. Okay. Now minimum 3 value होनी चाहिए. A coordinate of A, first of all value of x and then value of y. Degree Celsius as a x and Fahrenheit as a y. इसको x axis पे प्लॉट करना है, इसको y axis पे. ओके. पॉइंट B 40,104 and point C 60,140. Okay, this is our table first. This is our table first. Okay. Now table first, we obtained graph. This is our table first. Okay. By table first, we obtained graph. We obtained graph. Only plus x axis and plus y axis. X axis O y. यहाँ पे अपन को सेल्सियस टेम्परेचर इन सेल्सियस इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे फारेनहाइट टेम्परेचर इन फारेनहाइट. ओके, इस डायरेक्शन में height. Okay, this is format of graph. Now set the scale on each axis. What is minimum value 20 and maximum 60. 20 का डिफरेंस ले लिया अपन, 20 40 एंड 60, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 68 और मैक्सिमम है 140. 10 का डिफरेंस ले लें. स्टार्ट करेंगे 60 से. 60 70 80 90 100 110 120 130 and 140. Okay, this is y axis. यहाँ पे किंग शो कर दिया, यहाँ पे वो डिफरेंस ज़्यादा है. नाउ 20 and 68 ये आ जाएगा 0.8. 20 value of x 20 and value of y 68. Point B 40 and 104. 40 and 104 यहाँ से 4 thin line above to 100. This is point B. 60 to 140 ये आ गया 60 to 140. Point C. इनको आप ज्वाइन करा दो ऐसे.
इसको एक्सटेंड कर देना, इसको इधर एक्सटेंड कर देना। ये है लीनियर इक्वेशन कौन सी, f इज इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। नाउ हेयर राइट द scale on x-axis। वन बिग बॉक्स इज इक्वल 20 यूनिट, 20 का गैप है। वन बिग बॉक्स इज इक्वल 20 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 10 का गैप है। वन बिग बॉक्स इज इक्वल 10 यूनिट। ओके, सो आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 8 इज कंप्लीट। इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है और 4 पार्ट्स और है रिमेनिंग। ओके, ये ग्राफ की एक्सरसाइज है और आपको या तो x के इक्वल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है या y के इक्वल, ठीक है, और उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू गेन हो जाएगी, टेबल की फॉर्मेशन हो जाएगी और टेबल की वैल्यू से आप ड्रा कर दोगे ग्राफ को। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 8, if the temperature is 30 degree Celsius, if इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रखिए ना, वो पीछे पार्ट फर्स्ट में वो है इक्वेशन फर्स्ट। ओके, if the temperature is 30 degree Celsius, if the temperature is 30 degree Celsius, 30 degree Celsius, what is the temperature in, is the temperature in Fahrenheit? Okay, Fahrenheit. तो answer put C is equal 30 in equation first। तो F is equal 9/5 into 30 plus 32, 5 6 जा 9 6 जा 54 plus 32, 4 and 2 6, 5 and 3 8, 86 फारेनहाइट होगा। ओके, फारेनहाइट में क्या होगा 86। क्वेश्चन नंबर 3, if the temperature is 95 Fahrenheit, if the temperature is 95 Fahrenheit, what is the temperature, then what is the temperature, the temperature in Celsius? Answer Fahrenheit, put F is equal 95 in equation first। तो F के पहले इस पे 95 is equal 9/5 into C plus 32। 32 को रिप्लेस कर दिया हमने तो माइनस का हो गया 32, 9/5 into C, 5 minus 2 3, 9 minus 3 6 is equal 9/5 और C की वैल्यू क्या आएगी अब
9/5 है, रिवर्स होएगा, ट्रांसफर होएगा, देन रिवर्स हो जाएगा। C इज इक्वल क्या हो जाएगा 63 इंटू 5/9, 9 7 63, 7 5 35, तो सेल्सियस में क्या आएगा 35। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन 8th। 5 पार्ट्स हैं इसके, 3 पार्ट्स कंप्लीट, 2 पार्ट्स रिमेनिंग। If the temperature 0 degree if the temperature is 0 degree centigrade, is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? What is the temperature in Fahrenheit? Okay, and if the temperature is the temperature is 0 degree Fahrenheit, then what is the temperature? What is the temperature in Celsius? Okay, solution. Put C is equal 0 in equation first. So F is equal 9/5 into 0 plus 32. ओके, ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया, मल्टीप्लाई में ना 0, 0 प्लस 32, तो फारेनहाइट में क्या होगा 32। ओके, पुट C is equal, F is equal 0 in equation first, तो 0 is equal 9/5 into C plus 32, ये माइनस 32 हो गया, इज इक्वल 9/5 इंटू C, और C इज इक्वल क्या हो गया -32 इंटू ये 5/9 हो जाएगा, रिवर्स होएगा तो। ओके, ये आ गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 12 एंड 1 60 अपॉन 9 माइनस, तो सेल्सियस में क्या आएगा -160/9। ओके, और लास्ट पार्ट 5th, is there a temperature which is numerically the same? It is, there is a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius. Okay, yes, आंसर होगा -40 डिग्री। ओके,
yes, for minus 40 degree in at both are same. चेक कर देते हैं. पुट C is equal minus 40 in equation first. F is equal 9/5 into minus 40 plus 32. 5 8 जा minus 8 into 9 minus 72 plus 32. ये भी कितना आ गया minus 40. ओके, तो माइनस 40 डिग्री पे जो फारेनहाइट एंड सेल्सियस है वो क्या होंगे, सेम. ओके, ये भी माइनस 40 और ये भी कितना गेन हुआ, माइनस 40. हेंस योर एक्सरसाइज 4.3 इज कंप्लीट. ओके, नाउ 4.4 इन नेक्स्ट वीडियो. तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको ग्राफ की, ग्राफ पेपर पे. ओके, थैंक्स.